พระมหาฉลองจันทสิริ The President ITTC Praise สังฆอนุโมทนา Please be seated. Please be seated. Before going to lunch, we have with us Dr. Harshdeep Kamble sir, the great Mahaupasaka. He is the Principal Secretary of Maharashtra Social Justice Department. I would like Shrutika and Vagmadisi Madam to kindly welcome him. Dr. sir, please get welcome. I would like to Sister Vagmadisi and Shrutika Gajbhai kindly welcome Dr. Harshdeep Kamble sir, Principal Secretary, Social Justice Department and Mahaupasaka. Please be seated. Volunteers साधु 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 एंड वॉलंटियर्स अब अलर्ट हो जाइए। और इंडिया जो है अगले साल जो है चीफ ऑर्गेनाइजर होने वाला त्रिपिटक चैंटिंग का, तो वो जो पॉम्पलेट्स है वो भी रिलीज करने की गुजारिश मैं डॉक्टर हर्षदीप कामले सर से करता हूँ। ठीक है, बंते जी आशीर्वाद देंगे। और वो बंते जी काइंडली आप भी ज्वाइन कीजिए। हाँ मैं देता हूँ। बंते जी वो रिलीज करना है, पॉम्पलेट रिलीज करना है। हेलो हेलो चालू है, ये ले लेते ना। हेलो 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 This way, you come this way, you come this way, you come this way. You come this way. I would like Dr. Harshdeep Kamble sir to speak. Hello. I have the very good fortune to invite and welcome Mr. Harsha Campbell, who is a great Mahaupasaka. As you know, he has done many great activities here all over India. His wife is from Thailand, and he supports many projects for Buddha Sasana. And we asked him to release this news because he is also officially part of the Indian government. But he would like to say a few words. Please, warm welcome to Mr. Harsha Campbell. Thank you. I pay my respect to Venerable Sangha, and it's a great occasion to be here on this International Tripitaka Chanting of 2025. I would extend my sincere thanks to Sister Vangmo Dixi and her organization, all the devotees over here, lay persons, upasakas, नमो बुद्धाय जय भीम। मुझे यहाँ पर बड़ी खुशी हो रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटका चैंटिंग 2025 का यहाँ पर दीक्षा भूमि में इतने हर्ष और उल्लास के साथ में हमारे जो पूजनीय भिक्षु संघ है उनके साथ में ये चैंटिंग यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मैं काफ़ी सालों से सिस्टर वांगमो दीक्षी इनके इस प्रयत्न को सराहना करता हूँ कि इतने सालों से उन्होंने ये सभी मॉन्क्स जो है इनको साथ में रखा है और देश विदेश में ये त्रिपिटका का चैंटिंग हर साल करते आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड डीपली अप्रिशिएट सिस्टर वांगमो दीक्षी फॉर ऑर्गेनाइजिंग this international Tripitaka chanting year after year. It's really a noble cause that sister you are doing this, and we would like to also thank you for making us a part of this noble cause. With this, I would like to give my congratulations for this 20th International Tripitaka chanting ceremony which is going to be there. So they have organized again a big event. So I would like to congratulate them and also would like to be a part of this 20th International Tripitaka Chanting Ceremony जो दिसंबर 2nd and 13th 2025-26 में रहने वाला है। हम भारत देश की तरफ से, इंडिया इसका चीफ ऑर्गेनाइजर है, तो हम भारत देश की तरफ से, हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से जो भी पॉसिबल होगा आप सब मदद करने के लिए तैयार है।
we are grateful, and of course we would like you, we hereby commit ourselves to extend all the support that would be required from our side. Thank you for making us part of this noble cause and this noble Tripitaka chanting. I once again welcome all Venerable Bhikkhu Sangha to this very sacred Diksha Bhumi. Thank you so much. Namo Buddhaya. Jai Hind. Sadhu, sadhu. Riya Gona Samate Vanchatan Ithyang Sao Chatan Tên Cha Sao Chatan Papakarai Upayanta Sao Chatan Sao Sao Chatan Sao Vihanyatan Tỳ Swa Cam Kê Lanh Tham Mát Ta Nào Y Thiên Mô Tê Tên Tên Cha Mô Tê Tên Kata Punya Upayan Ta Mô Tê Tên Sao Pa Mao Tê Tên Sao Pa Mao Tê Tên Tiên Swa Cam Vi Son Thi Mát Ta Nào Y Thiên Tam Pa Tên Tên Cha Tam Pa Tên Pa Pa Ca Rai Upayan Ta Tam Pa Tên Pa Pang Mê Ca Thanh Tê Tam Pa Tên Thầy Do Tam Pa Tê Tốc Ca Tăng Ca Tao Y Thiên Nôn Tê Tên Tên Cha Nôn Tê Tên Kata Panya Upayan Ta Nôn Tê Tên Panyang Mê Ca Tan Tê Nôn Tê Tên Thầy Do Nôn Tê Tên Sọc Ca Tăng Ca Tao Ca Hôm Pê Chê Sa Hê Tăng Phía Sa Mia Nô Nè Tắc Ca Rao Hao Tê Nè Rô Pa Mát Tao Pa Kia Pao Tua Vô Ca Nê Yang Pa Rê Sang Nè Phia Ca Via Sa Manya Sa Hao Tên Samma Pa Chia Nô So Vi Mốt Ta Chấp Tao Anupati Dia No Ithya Via Hu Rang Via Sa Hia Kya Via Sa Manya Sa Ante Dạ Maka Vako Pa Tha Mao Anumo Tệ Ni. So now, according to the directions of Bante Pramaha Puttaviro Ampon, to after any chapters, we need to summarize a little bit, not long, because we have to chant more. So again, I'm great honor to be here, and now I summarize the first chapters of the Dhammapada, the ways of treasure. Dhammapada means the ways of treasure. Dhammapada is the books that the Buddha used his whole 45 years in India, teach and express and taught to those people, to those Indians at that time. The Buddha take Dhammapada verse to teach those persons according to their previous experience. So previous experience is very important. If the Buddha know that this person had listened this Dhamma in previous Buddha's time, so the Buddha just get the right point to him, and he easily to understand and realize the truth. We see the story in the Buddha's time. Some people listen only half stanza, some listen the full stanza and enlighten the Dhamma, become an Arahant, become an Sotapan, Sagadaga, Anagami.
but we are listen a lot. Why we not enlightened? Because this is how the Buddha take all the Dhamma to get the point. Like a doctor to know their patient, their sickness exactly, and they just give the direct the right medicine to those patients. That's why Dhammapada is the same. There are 423 verses the Buddha teach during his 45 years in Dhammapada, and there are 305 stories related to the Dhammapada. So Indian culture, tradition, behavior, and how the Indian respect the monk, how Indian communicate each other, it is all in Dhammapada. So in this Vaka, Dhamma Sankitika Chara, the Sankiti, I mean Venerable Mahakashapa, Ananda, etc., that come to the first council, just collect all the Dhamma into group. Dhammapada divided into 26 chapters, and first chapter called Yamaka. Yamaka means pair. It is pairing. When there is advantage and there is disadvantage. Wholesome, unwholesome, good and bad. So in the first Vaka, especially the first stanza, Manopabangama Dhamma Manosetta Manomaya, it is refers to the mind, first runner, the chief, the best, and the mind made. So every action, by verbal action, by bodily action, lead by mind. Mind made everything. Mind made anything in this world. Human beings just create the place and enjoy themselves. For example, we see the beautiful flower in front of us, but the flower is flower. Your eyes cannot see anything, but only your mind made flower beautiful. But actually flower is just flower. Nothing. के पूर्व संस्कार है तो छोटे से एक गाथा में वो समझ जाता है. आज हम इतना पढ़ते हैं फिर भी हमको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती. तो इसका मतलब पूर्व संस्कार होने चाहिए. पूर्व जन्म में बुद्ध से मिलना, उस शासन में काम करना, ऐसा अगर किया हो तो फिर संक्षिप्त में भी बात समझ में आती है. तो खास कर बुद्ध धम्मपद में जो पहली गाथा है, मनोभुभंगमा धम्मा मनोसट्टा मनोमाया, तो ये बुद्ध बता रहे कि मन की क्या विशेषता है. मन ही श्रेष्ठ है, मन ही सबसे आगे दौड़ता है. मनोमया, मन से ही हम बने हुए. तो जो भी हम कार्य करते हैं वो पहले मन में उत्पन्न होता है, उसके बाद फिर वाणी और शरीर पर उतरता है. तो अगर हमारे मन के अंदर अच्छी बातें हैं तो वाणी में और शरीर में भी अच्छे शब्द और अच्छे कर्म आते हैं. अगर हमारा मन दूषित हुआ तो फिर वाणी और शरीर से भी दुष्कर्म होते हैं और दुख भी पीछे पीछे आता है. तो इस तरह से धम्म में 430 गाथाएं हैं और 305 इसके बारे में कहानियां जुड़ी हुई है. तो इस तरह से कहानी और संक्षिप्त गाथा में भगवान बुद्ध जो है उस समय के लोगों को धम्म समझाया करते थे. तो यही एक संक्षिप्त में उन्होंने बताया. धन्यवाद. अब जो है दूसरा वर्ग जो है भारतीय संघ सज्जायन करेगा, वो है अपमाद वर्ग. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. अपमादो मतपदं अपमादो मच्छनो पदं अपमाता नवीयति अपमाता यमता एवं विशेषो त्वपमादं पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति आर्याणां गोचरे रता
te chayino satati ni chandala parakama Tusayandira Nibbanam Yogakemam Anuttaram Uttanavato Satimato Suchikamasanisamakarino Sanjatasadhamma Jivino Apamatassayaso Bhivadhati Uttanena Pamadena Samyumena Dhamena Cha Dipam Kairatame Bhavi Yang Okona Bhikirati Pamadamaluyanchanti Bhaladhummedino chana Apamadancha medhavi Dhanam settam varakhati Mapamadamaluyancheta Makamarati santavam Apamato hichayanto Papoti vipulam sukham Pamadam apamadena Yadanudati pandito Panya pasadamaruha Asoko sokinam pajam Papatato abhumate Dhiro bhale avekhati Apamato pamate sutesu bahujagarut Abala samvasikhaso Hittava yati sumedhaso Apamadena maghava Devanam sehatam gato Apamadam pasangsanti Pamado garahito sada Apamadarato bhikkhu Pamade payata siva Samyochanam anum tulang Daham agivagacchati Apamadarato bhikkhu Pamade payata siva Abhabbo parihanaya Nibbana seva santike Sadhu, sadhu, sadhu. I can translate into
in the world that there is happen and there is also disappear. So when you know exactly all sorts of these things in the universe that combine with all those elements, you will be close to the Nibbana, the supreme absolute bliss of Nirvana, that absolute sense in Buddhism. So it is very important, pamada and appamada. When you pamada, it means you dead. When you appamada, you mindful, you alive. And Buddha, only this word, from the beginning until his parinirvana, he also focused on Handadami bhikkhave amandayami vayadhammo sankhara appamadena sampadeta. So mean appamada here, you make your activity, your duty fulfilled with mindfulness. And this mindfulness refers to three things. Study hard. Take the words of Buddha and study with mindful. And then when you study, you practice. Paripatti, you practice and share this knowledge that you gain, and sharing the benefit of others, like Dr. Ambedkar, when he tried his heart, changing his life from the very beginning, from poor family, and he learned, he get education, and then he gave this education to the nation, to other people. This is what appamada means. You learn, you get education, and you change yourself first, and then you give this benefit that you have educated to your nation, to other people, to the world. This is mean appamada. And then finally you attain the bliss of Nibbana because of appamada. You help yourself and help others. Thank you very much. तो जो सज्जन किया वो अप्रमाद हो गया ना, हमारे हिंदी में हम कहते हैं अप्रमाद होकर जीना। अप्रमाद होकर जीना यानी सजग होकर जीना। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि जो प्रमाद में रहता है वो जीते जी मरा हुआ इंसान है। वास्तव में जो अप्रमाद होकर जीता है वही आदमी जिंदा है, वही आदमी सजग है। और एक जगह भी वो कहते हैं कि जो अप्रमाद होकर जीता है वो एकदम निब्बान के करीब है। तो इसलिए सजग होना, जिसको हम और एक भी ध्यान में सती कहते हैं, है ना, 4 प्रकार के सती है, कायानुसती, वेदनानुपस्ना में, धम्मानुपस्ना, चित्ता, ये सब जो है सजगता के, वेदना के आधार पर, काया के आधार पर। तो सजग रहना बहुत ही जरूरी है। आम दुनिया में भी हम आमतौर पर जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई सजग रह के काम करो, सजग रह के सब्जी काटो वरना उंगली कट जाएगी, सजग रह के चलो वरना ठोकर लग जाएगी, है ना। हर चीज के लिए सजगता जरूरी है। आदमी अगर सजग नहीं रहा तो कई सड़कों पे आपने देखा होगा कि सजगता हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसलिए जिंदगी में सजग होना बहुत जरूरी है। अच्छे कर्म के प्रति सजग रहना है और जो गलत कर्म है उसके प्रति भी सजग रहना है ताकि हम उसे न करें। तो संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो अपमाद यानी सजग होकर देखना, बिना प्रमाद के जीवन जीना। जो बिना प्रमाद के जीवन जीता है वही सुगति की ओर और निर्वाण की ओर भी बढ़ सकता है। तो ये संक्षिप्त में था। अब दूसरा देश चांटिंग करेंगे। म्यांमार। अब जो है म्यांमार जो है वो सज्जायन करेगा। हेलो 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 Sikawen Kyape Suraja Hong Pandana Zavale Sikam Durakhan Dunia Variza Votale Kito Kamogata Vado Parivandati Nasete Maradeye Vadadawe Duniga Salahu No Yadagamano Padino Sitasa damano tadu sita dadade dukhavale Tudu dadane tuni bunye yadakamati padina Sita rakeda midawe sita gudu sav dukhavale
Duragamane kasare asari gutayem yedesa kamati mokhanti marabandana anawati sekasa sadame aviza pano pariphala bhagavata panyana paripostati anavada sada sedasa anavada sedaso punya bapa hinada nada dajai paraya kumbhu pamaya kaya nina vidi vadam nada rupame sedane data padeva yurida marayan panya buddha dena zedin zarake aniva vinodiye asira bakayam kayo pathavi arite desi duri akare ganeno niraphan va kalang gedyan disabosam yam dam kariya Eva pana viriya mesa panita sekta papiyo nalo tato kade nadam mata pita kariya aneva pisa tadaka samati patita sekta teyato natato kade tadu tadu tadu. So, thank you, Myanmar Sangha. So, the third chapter we call Chitta Vaka. Chitta Vaka, the chapter about the mind. So, first Buddha taught us about the natures of mind. The natures of mind. And then the how to train the mind. And then when you train mind very well, how the result you get. So Four Noble Truth, the Buddha said about the natures of mind. What is the natures of mind? Pantanang chapalang chittang dunavaryang turakhang kuhasayang. Pantanang chittang, mind is never calm. Pantana, it means shaking and waving like the sea, never calm. So mind, the natures of mind never calm. The natures of mind, ekacharang, go alone, no wife, no children, no friends, no companion. Mind is ekacharang, go alone. Asarirang, no form. Mind is no form. And lautang, the mind is also turangamang. Turangamang means go very far and go fast. For example, we are sitting under the Dikshapumi stupa, but sometimes our mind is in Delhi, sometimes our mind is in Sanchi, sometimes our mind is in USA, in Thailand, in Cambodia, in Laos, in Vietnam, or around the world. So mind is Durangamang, travel very far and travel very fast. You just think, immediately the mind is there. You just imagine what Delhi gate or Indian gate look like, and then your mind is there in Delhi. So it is the nature of mind. And if you don't control the mind very well, the mind made many problems. Because if you just follow your mind, you never sleep, you never eat, you never work good, and then you fall down. That's why the Buddha compared the mind like a fish. Fish. What is the nature of fish? Fish living in the water, right? Fish living in the water. But when we catch, the fisher catch the fish and throw out to the earth, to the ground. So how the fish? Fish just trying to go back to the water. Our mind also the same. Our mind always traveling into this sensual pleasure. Roop,
Vedana, Sanya, Sangara, Vijnana. So mind always travel to this sense of pleasure. They delight, it delight to the pleasure world. So if you meditate, it's never easy. When you sit down, sometimes you learn without meditate. You think, oh, it's easy to meditate. I know all the Dhamma, I know the Tipitaka. I just sit one moment and then I will get calm and then enlightened. But it is not like you think. If you not sit, if you not practice, you will not know how mind difficult is. Like Bande Mahasiva of Anuradhapura, he has 30,000 students as Arahant, but he himself not Arahant. He said, oh, Arahant is easy to take, just only one moment. But he practiced 30 years, and he crying and crying, how can I cannot attain Arahantship? Because mind is not only study, mind has to practice. So that's why Chittang Kuttang Sukhavahang, Chittang Rakhang Sukhavahang, Chittang Dantang Sukhavahang. It means when you control the mind very well, when you take care of your mind very well, when you tame your mind very well, you will bring happiness. So it is the nature of mind is dukkha satya. Nature of the mind is never calm, mind is always traveling to their desire. It is dukkha satya. And the cause of mind made many problems. It is dukkha samudaya satya. And then the way that the Buddha says about trying to control your mind by meditation, by learning, by forming the happiness in the realms of Buddhism, it is called magga. And then when you practice, when you tame your mind very well, you get happiness, nibbana, it is nirodha. Anumodana. तो अभी जो सज्जान किया गया वो है चित्त वग्ग, है ना। तो चित्त तो हमारे हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है। चित्त और मन ये पर्यायवाची शब्द है। मेरा मन विक्षिप्त है, मेरा चित्त विक्षिप्त है। तो इस तरह से ये चित्त के बारे में बताया कि जैसे पहली गाथा में जैसे कोई तीर कमान वाला अपने तीर को ठोक ठोक कर जो है सीधा करता है, ठीक, तो ठीक उसी तरह से मन को भी अपने को एक तरह से ठोक ठोक कर सीधा करना है। तो मन को कैसे ठोकोगे? मन को दान से ठोकना है, शील से ठोकना है, समाधि से ठोकना है, प्रज्ञा से ठोकना है। ऐसे ठोक ठोक कर जैसे तीर को सीधा किया जाता है वैसे मन को भी सीधा किया जा सकता है। मन का स्वभाव है कि हमेशा वो इंद्रिय सुख में दौड़ते रहता है। तो जब इंद्रिय सुख में दौड़ता है तो उसको अगर संयमित नियमित करने जाओ तो वो सुधरने को तैयार नहीं होता। तो उसका एक अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली किस तरह से तड़पती है, उसी तरह से विकारों में भरा हुआ मन को अगर नियमित करने जाओ, संयमित करने जाओ तो वो एकदम मछली की तरह तड़पने लगता है। तो इसलिए मन बड़ा आसान नहीं है उसको सुधारना, लेकिन बार बार उसको प्रयत्न करना चाहिए। तो मन को हमेशा सजगता से उसको सुधारना चाहिए। जब तक सजग रहेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या करने से क्या दुष्परिणाम है, क्या करने से क्या अच्छे परिणाम है, इसको हम जानेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर मन को बुरे और हम झुकने नहीं देंगे और अच्छी ओर लाने का प्रयत्न करेंगे। तो संक्षिप्त में ये इतना ही है, और भी बातें कही हैं, लेकिन अब दूसरा जो चांटिंग है हमारा थाईलैंड संघा चांट करेगा। साधु साधु साधु। अब थाईलैंड की बारी है। Now we will lead all of you in Thai style, Sangyok. But for basic to Triple Gem, we are in Indian style. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุปะวะโคจตุโถโกอิมังปะตะวิงวิเชสติยมะโลกะจะอิมังสะเทวะกังโกธรรมะปะทะสุโธสิตังกุสะโลปุปะมิวะปะเจสติเสโคปะทะวิงวิเชสติยมะโลกันจะอิมังสะเทวะกังเสโคทะมะปะทังสุเทสิตังกุสะโลปุปะมิวะปะเจสติเพโนปะมังกายมิมังเบเตตะวามะเรจิธรรมะอภิสัมพุทธาโนเจตวานะมาราสะปกนิอาทัสสะนางมาจุราจาสกาเจโปภานิเหวะปฏินานตัมพยาสัตตมนาสาระรังโสตังคามังมโหโควมัจจุอาทายะคาจติปุภานิเหวะปจินันตังพยาสัตตมนาสังนรังอติตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวะสัมยาธาปิภมะโรปกพังวันนะวันตังอาเหตยะปะเลติรสมาทายะเอวังคาเมมุนีจเรนะปะเรสังมิโลมานินะปะเรกตากตังอาตะโนวะอเวคายะกตานิอักกตานิจยาธาปิโรจิรังโปพังวานนะวันตาอาคันทะกังเอวังสุภาสิตาวาจาอภาลาโหตุอากุปพระโตยะธาปุโรจิรังโปพังวะนะวันตังสาคันทะกังเอวะสุภาสิตาวาจาสัพพะลาโหตุสุโกภะโตปิโปภาราสิมหากายิรามาละกุเรปะโหเอวังชาเตนะมาเจนะกาตาพังโกสลังพระหงนะโปปะกะโทปฏิวาตะเมตินะจันทนาตะกรมันลิกาวาสตันจักขันโทปฏิวาตะเมติสาภาทิสาสาปุริโสปวายติจันทนางตะกรังวาปิโอปะลักอาทาวาสิกิเอเตสังฆาทัชชาตานังศีลขันโทอนุตตรอาปมาโตอาญะขันโทยะวายังตากรจัตทะนิโยจะศีลวะตังขันโทวาติเท
สุตโมเตสังสัมปันนาสีลานาอัปปมาทวิหารินิสัมมาทัญญาวิโมตตานังมารมัคคะนะวินทติยาถาสังการทะนัสสมิงโอชิตาสมิงมหาปาเทปาทุมังตาทาชาเยตสุจิขัดทางมโนระมังเอวังสังการะโพเตโสอัตถะโพเตโปโตจะเนอิติโรจติปัญญาวะสัมมาสัมพุทธัสสะวะโตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภานาสาธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสาธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆาโนภาเวนะสัทธาโสติภาวันโตเตปุปปวโกจตุโถนิทธิโตสาธุสาธุสาธุ So now we at almost 10:30 now. So it is the last one. So maybe Vietnam is after lunch. So we came to the chapter 4. I think you all know this chapter, flowers. Puppavaka, the chapter. This noble truths. Flower. The Buddha compare mind, the Buddha compare people, the Buddha compare virtue, the Buddha compare bad and good to the flowers. Flowers can be bad, flower can be good. So flower is just material, just form. So flower, when you know flower, when you know exactly the natures of flower, it is called, dukkha, dukkha satya, the noble truth of suffering. Because we all love flower. We like to see flower. There are many colors of flower, white, red, yellow, so blue, something like that. So when you know that flower, the Buddha compare first. Flower can make people die. Why? Because when you see the beauties of flower and you attach with it, like people attach with the same pleasure, same desire, or desire with all these worldly things. So the flower compared to the kama tanha, sense of pleasure. So when you decide with this all sense of pleasure, you compare with the very deep sleeping people on the banks of river, and then just the river take over these people to the sea and die. Like the mind, if you stuck with the flowers of pleasure, you never get rid of this pleasure, it will you die. That's why in our phrases, be ant never die in the jars of salt. Ants always die in the honey, always die in sugar, right? So they like to eat sugar, they like to taste sugar, so they will die in that sugar.
So our mind is also the same. So when you know the mind exactly about the natures of this flower of desire, and then you know the first truth, the noble truth of suffering, dukkha. And then the Buddha compare this to the bad thing, desire, sense of pleasure. It is called dukkha samudaya, the truth of cause of suffering. Because all the suffering from our desire, from our hatred, from our delusion. So when you see this flower, the Visarukha, one time the Buddha was in Himalaya, he had we call Puppaka Roga. It means allergies to the flower, allergic to the flower. And then the story of Venerable Mahakajayana to treat all the monks about allergic illness, sickness. And then the Buddha and all the bhikkhu recover very well. So flower can be poisonous. This poisonous compared to our uncontrolled mind. And then the Buddha compare also the mind well with this flower. Like the Buddha said, when you plant the flowers of loving kindness, the flowers of compassion, the flowers of sympathetic joy, the flowers of charity, the flowers of practice, the flowers of virtues, this flower will beauty your garden, your body. Your body is like a garden. Your body is like garden. And flower that you plant is your mind. And mind related to mental formation. It is like loving kindness, like compassion, all of these things, charity or virtue. These things that compared to the flower that you grow, you plant in your garden of the body. Then many people coming to see, to look your garden, and they take care of you. And then this garden will grow up and fruitful to everyone. So this is how we gain the absolute happiness in Buddhism, Nirodha, and also Magga, to practice, to train. And one thing in this Puppavaka very important to you in Diksha Bhumi. So Diksha Bhumi, I just read, Diksha means ordain, and Bhumi means the ground or the land. So Diksha Bhumi means the lands of ordination. The land of ordination. So here it's mentioned about the ordination, the monk. Mentioned about the monk, it is like a bee. Monk is like a bee. You know all bees, right? When bee collect the taste from flower, bee never destroy flower. Bee never damage flower. He just collect the taste and make a very good honey everyone like. A monk also the same. Monk, Sangha, go to Pindapata, go to collect the food, never destroy family, never destroy others. They accept whatever you give, and they protect Sasana. No monk, no Sasana. No Sangha, no Buddhism. No Buddhism, no Sangha. And Sangha living because of you, Upasha, Upasika, to support them. If you not support them, they cannot live. So that's why here the ordained ground, the lands of ordination, Ambedkar, Dr. Ambedkar place Buddhism here, start Buddhism here. Buddhism is take deep root here. But what we miss, we don't have much monk here. So that's why Buddhism here is only in the family, in the city, in Maharashtra, but not flourish again like Ashoka time to spread Buddhism around the world. So to become a Buddhist, even that's why Bhante Sampak always said me, oh, Dr. Ambedkar is the reincarnation from Ashoka. Because Ashoka want to be a Buddhist family and ask the monk who did the great merit and
who sacrifice more than other in Buddhism, in the past or now? And the monk said, Yo, King Ashoka, hand out, donate a lot of things more than other king, even Anathapindika Vishaka. And he asked, am I became a Buddhist family? The monk said, no. Buddhist family, I don't mean that you practice, but mean the who are in the Buddha family. King Pasenajit in Buddha's time married to Vasapakataya to become a relative of the Buddha. But Ashoka want to become a relative of the Buddha by what? By ordain his children, Mihindra and Sanghamitta and Sumana Samane. So these three men, these three persons make Ashoka become a relative of Buddha. Dr. Babasaheb Ambedkar ordained start Buddhism here and start the Buddhism in Indian Constitution also to transform all of these things to related to Buddhism, want to promote Buddhism again. So he placed here. So now what to do of the people in Diksha Bhumi? Just encourage your son, your daughter. May you sacrifice one or two from your village to be a monk, and then Buddhism will take here to the world again, because the Paratamata in this good soil for planting everything. So I hope that this will make you grow up very well, because Buddhism is strong here. I feel very strong here. So Pupavaka, about the flower, please plant more flowers of monks. Plant monk here. If you not plant monk, maybe only Buddhism with your community, not spread out to the world. Anumodana. तो पुप्पवग यानी भगवान बुद्ध ने फूल का उदाहरण देकर धम्म को समझाया है। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं कि जैसे फूल में अगर खुशबू ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से व्यक्ति सुंदर हो लेकिन अगर उसमें चरित्र नहीं है, शील नहीं है, तो बिना खुशबू के फूल की तरह है। और एक भिक्षु का उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी जंगल में जाकर फूल में जो रस है वो निकालती है, लेकिन फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक उसी तरह से भिक्षु को भी जो है वो चारिका पर जब जाता है तो जो मिला जितना दिया उतना लेकर आता है, बिना गृहस्थी को कोई आर्थिक या और प्रकार का नुकसान पहुंचाए हुए। तो इसलिए इस संक्षिप्त में और भी बहुत सारी बातें की है, लेकिन हमारे पास और एक देश है चांटिंग के लिए, समय हो रहा है भोजन के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अब जो वियतनाम का संघ है वो अभी सज्जायन करेंगे। द वियतनाम संघ विल चांट नाउ। Next, Vietnam. After Vietnam, Upachok Upachika offer food, after offer, Sangha bless Anumodana, and we would like to invite Sangha to go to have lunch over lunch. Vietnam, please. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sayosana Dikopalanang Sangsaro Sathamang Avichanakang Javanchena Kikacaya Sayang Sarisamatano
ปุตตามาติตานัมมาติอิติปาโลวิหัญญติอัตตาริอัตตโนนาทิกุโตปุตตากุโตทานังโยบาโลมัญญติบายังปันดิโตวาปิโตนะโสปาโลจาปันดิตานามิสาเวปาโลติวุจติยาวชิวันติเจปาโลปันดิตังบายิรุปัสสตินะโสธัมมังวิชานาติดาปิสุปารสังยตาโมตมะปิเจวิญโยปันดิตังบายิรุปัสสติเขปังธัมมังวิชานาติเชวาสุปารสังยตาจารันติปาลารุเมตาอาเมเตเดวะอัตตนาการุณตาปาปะกังกัมมังยังวติกาตุกาปะลังนาตังกัมมังตังสาธุยังกาตวะอนุตาปฏิยาสะอาสุมุโคโรดังวิปาตังปฏิเสวติตัญจกัมมังกตังสาธุยังกาตวานานุตาปฏิยาสัพปติโตสุมาโนวิปากังปฏิเสวติมาทุวามัญญติปาโลยาวะปานังนาปัจจติยาราชปัจจติปาปังปาโลดุกังนิกัจจติมาเสกุสะเกนะปาโลปุญเยยะโภชนังนัสโสสังฆาตธัมมานังกาลังอาคติโสลสินาหิปาปังกตังธัมมังสัจจุกิรังวะโมจติดังนั้นตังปาลามันเบติรัสมัจจันจวะวะโกยาวะเดวะอนันตายานาตังบาลัสสะจายติอันติปาลัสสะสุตัมมังโมตัมมัสสะวิปาตายังอาสันตังภาวนามิจริยาปุรการัญจภิกขุสุอาวาเสสุจาริสาริยังปุจาภารกุเลสุจามโนวัจตัมมัญญันตุกิวัปปจิตาอุโภมโนวาติวาสาสุเอจาเกเจสุตุสมิจิ
ติอัญญาวิราคุปนิสสาอัญญานิปปานกามินีเอวเมตังอภิญญายาวิโภพุทธัสสะสาวกสัพพะรังนาดินันเดยะวิโวตามานุปรุหะเยชาลาวะโกปัญจโมเนหิโตสาธุสาธุสาธุ Now this good time for offer lunch to Venerable Sanghas. For the translate to English and Hindi, we move in the afternoon time. We have chanting, we have Dhamma discussion, and we have silent meditation in this stupa. Now, Ubachak Ubachika will repeat the word for Sankarana or food, follow me, and after that the Sangha blessing Anumodhana. Namo together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Offer to the Buddha. Imang. Repeat after me. Imang. Imang. Supa Payanchana Sampanang. Supa Payanchana Sampanang. Sarinang. Salinang. Pochanang. Pochanang. Utthakang Warang. Utthakang Warang. Puttassa. Puttassa. Puchema. Puchema. Next offer food Pattahara to Sangha. Imani. Mani. Mayang Phante. Mayang Bante. Pattani. Pattani. Saparivarani. Saparivarani. Bhikkhu Sanghassa. Bhikkhu Sanghassa. Ono Chayama. Ono Chayama. Sathuno Phante. Sathuno Phante. Bhikkhu Sangkho. Bhikkhu Sangkho. Imani. Imani. Pattani. Pattani. Saparivarani. Saparivarani. Patikhanhato. Patikhanhato. Amhakang. Amhakang. Tikarataṃ. Tikarataṃ. Hitaya. Hitaya. Sukhaya. Sukhaya. Sadhu.